Ji, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss how to develop research title, objectives, and research questions. In my last class, we do this activity and we developed our research question. Just to revise what we have done, can anyone tell me what are the basic components of research title? And what is the difference between topic and title? Okay. Write your responses on a piece of paper and share these responses with me on the day of class. So the title is without doubt the part of a paper that is read the most, and it is usually read first. When you find out a research title article of your area of research, so first you read out the title, and if the title is relevant, so then you read abstract, and if abstract is also related to your research, then you download it. So the title summarizes the main idea or ideas of your study. A good title contains the fewest possible words that adequately describe the contents and or purpose of your research paper. We conducted one activity in our last class in which we discussed what are the uh, what are the factors related to educational leadership and management, and we found few significant factors related to leadership, and then we added these factors in our title. You have to make sure your research title describes the topic or the main area, the method, whether it is a qualitative or quantitative or a mixed method study, the sample, who is involved in your research, who are the respondents, and the result of your study. Obviously, you cannot add the result of the study, but you can add like this: impact, relationship, significance, analysis. You can add these words. You have to avoid unnecessary words and jargons. Keep the title statement is concise as concise as possible. So the minimum and maximum word limit is 5 to 15 words. But in some literature, some part of literature, 18 words are till 18 words are suggested. You want a title that will be comprehensible even to people who are not experts in your field. So the title must be simple, the title must be attractive and comprehensive in nature. Characteristics of a good research title. So effective title in academic research papers have several characteristics. So the foremost important characteristics of a research title is it indicates accurately the subject and scope of the study. Avoid using abbreviation, ESL, so we should not use. English as second language use. ELM, educational leadership and management, no. OD, organizational development, no. So we should not use abbreviations. Use words that create a positive impression. Don't use negative words. Failure, causes of failure of concept of global citizenship in education. So we should not use the word failure. Causes of failure of education system, we should not use. So we have to be very positive. Identify key variables if possible. And if you are identifying the variables, so you have to include independent and dependent both variables. Impact of educational leadership on employee satisfaction. So educational leadership uh, is an independent variable, and um, sorry, and employee satisfaction is dependent variable.
may reveal how the paper will be organized, whether it will be the qualitative or quantitative, or suggest a relationship between variable if possible. It must be limited to 10 to 15 substantive uh, words. Do not include in study of, analysis of, or similar constructions, but in some literature, these words are used. So there is no, if there is no fixed rules of making title. You may differ, you may deviate, but in academic researches, you must be, your title must be structured. Titles are usually in the form of a phrase, but it can also be in the form of a question. Use correct grammar and capitalization with all first words and the and last words capitalized, including the first word of a subtitle if there. Then research objectives. So I just want to show you this video. Then I will explain how to write research objective. I'm going to share a video here.
So come back on the PowerPoint. So your research objectives are your specific goals in which you discuss or share what you want to achieve through this research. So research objectives are usually expressed in lay terms and are directed as much to the client as to the researcher. So जो reader है वो भी आपके research objectives को बिल्कुल उसी तरह उसको पढ़ना चाहिए जैसे कि researcher को. Research objectives may be linked with your hypothesis or your research questions, and it is actually used as a statement of purpose in a study that does not have a hypothesis. So your research objective clearly helps to define the focus of your study. What do you want to do? Explore the nature of technology integration during COVID. So exploration is your main objective. Clearly identify variables to be measured. If it is a quantitative research, so in your objective, you write or you share or determine the relationship of variable. To measure the relationship or to find out the relationship between educational leadership and employee satisfaction. So here you are discussing the relationship of variables as well. Indicate the various steps to be involved. When we talk about research objectives, so obviously there must be more than one research objective because you must have one goal, but there might be more than one research objectives. So each research objective will discuss or determine or identify the steps of your research. For example, maybe in first stage you are exploring. In second stage, you are collecting data from the field and in quantitative way. And maybe in third stage, you are conducting an experiment. So your first, second, third, fourth objectives, these objectives are actually indicating the steps of your research. Establish the limits of the study. This I will do, this I will not do. Avoid collection of any data that is not strictly necessary. So आपके पास जब आप purposeful एक research करते हैं जिसमें clear objectives होते हैं तो फिर आप बिल्कुल अपने objective से stick रहते हैं और आपको पता होता है कि this I have to do, this I have not to do. जब आप field में जाते हैं तो you know there are plenty of information and enormous data. So आप अपने research objective से stick रहते हैं. A statement of research objective can serve to guide the activities of research. So first you have to write the purpose statement. What do you want to do? So the current study aims to, the study intended to. अब आप इसके आगे अपना ऑब्जेक्टिव या मेन गोल लिख देंगे. यहाँ पर क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट की बात हो रही है और ये जो क्वालिटेटिव पर्पस स्टेटमेंट है दैट मस्ट बी इन अ पैराग्राफ फॉर्म जिसमें आपकी पर्पस ऑफ द स्टडी है, सेंट्रल फिनोमिनन है, क्वालिटेटिव वर्ड्स हैं जैसे एक्सप्लोर है, अंडरस्टैंड है, डिस्कवर है, पार्टिसिपेंट्स हैं और रिसर्च साइट है. अब ये देखें दीज आर दी 6 कैरेक्टरिस्टिक है. एक तो ये सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए और उसके अंदर वो तमाम चीजें मौजूद होना चाहिए. दिस एक्चुअली क्राइटेरिया इज गिवन बाय क्रिसवेल. A good place to start is the purpose of this study. Narrative है, phenomenological है, grounded theory है, ethnographic है, case study. So the purpose of this phenomenological study is to understand the phenomenon of organizational development for the um, for the private school setting for the teachers at the private school. At this stage in the research, the educational leadership
will be generally defined as this. अब ये आप यहाँ, तो in this way you have to write your purpose statement. मैं कल क्लास में आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो, या जब आप लोग मंडे को क्लास, संडे को क्लास में आएंगे, तो आई विल चेक योर पर्पस स्टेटमेंट. अब ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए एज अ क्वालिटेटिव रिसर्चर विच एक्शन वर्ब्स विल यू यूज? टू एक्सप्लोर, टू डिस्कवर, टू इन्वेस्टिगेट, टू असेस और इवेल्यूएट को आप इग्नोर कर देंगी. टू मेजर को भी आप इग्नोर करेंगी. बट यू हैव टू राइट, you can write examine, present, to provide, to recognize, to reveal, to compare, to decide and describe, find out, determine, identify, ascertain, associate. So these words you can use for action words, you can use for writing research objective. And as you have watched in video, objective must be started with the action verbs. अब हमने ये चीज सीख ली कि हमने सीख लिया रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. अब जरा देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन research objectives and research question. I am inserting one table here. Title, title, objectives or questions. What is my title? My title is Factors Affecting Employee Satisfaction in Education and Exploratory Setting. अब देखिए, you have to be very careful कि जो हमने चीजें पढ़ रहे हैं उनको लिंक करते जाएंगे आप. क्या पढ़ा है हमने? ये कितने टोटल वर्ड्स होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 वर्ड्स. इट मींस वी आर सेफ. हमें 15 वर्ड्स तक लेना है, हमें 9 वर्ड्स में. अब यहाँ पर देखिए, वेरिएबल डिस्कस है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, सेटिंग डिस्कस है एजुकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च का टाइप डिस्कस है एक्सप्लोरेटरी स्टडी. एक्सप्लोरेशन इसका पर्पस है, इट मींस इट मस्ट बी अ क्वालिटेटिव स्टडी. अच्छा जी, फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल. तो देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है. ये कुछ चेक्स हैं जिनको हमने लगा लिया. ठीक है, अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स पे. टू एक्सप्लोर द फैक्टर्स associated with employee satisfaction in education. ये हो गया हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव. व्हाट आर दी, अब देखें रिसर्च क्वेश्चंस. ये अभी मैं रिसर्च क्वेश्चंस आप लोगों को बनाना भी सिखा रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हाउ दीज आर लिंक्ड. और ये टेबल अगर आपने लाजमी बनाना है ताकि आपका रिसर्च क्वेश्चंस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च टाइटल जो है वो अलाइंड हो. व्हाट आर द फैक्टर्स associated with employee satisfaction
in educational setting. अब जरा देखिए, आर दीज थ्री अलाइन? जो टाइटल में पूछ रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव है और वही रिसर्च क्वेश्चन है. यू मे मेक मोर देन 3 रिसर्च क्वेश्चन. यू मे मेक मोर देन 1 रिसर्च क्वेश्चन. To investigate the role of एक ऑब्जेक्टिव और बना लिया. अब उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना लूंगी. व्हाट इज द रोल ऑफ जेंडर in employee satisfaction at educational institution. ठीक है. अब देखें ये तीनों अलाइन है. ये प्रैक्टिस हमें करनी है. अच्छा जी, अब रिसर्च क्वेश्चंस. ये मैंने 2 वीडियोस दिए हैं, आप जरा देख लीजिएगा. मैं इसको अपने तौर पे स्टार्ट कर रही हूँ. How to write qualitative research question. I hope now you are able to write your research questions. So what you will do when you will come to the university on Sunday, so आप ये सारे काम करके लाइए. यानी अपना टाइटल बनाइए, उससे अपने रिसर्च और पर्पस स्टेटमेंट, आपका ऑब्जेक्टिव, आपके रिसर्च क्वेश्चंस, ये सब आप लिख के लाइए. इफ देयर आर एनी mistakes, so I will help you out, I will facilitate you. ठीक है. So this is an activity which you people have to do. पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से की टर्म्स हैं जो कि एसोसिएटेड है विद क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस. देन what is the difference between qualitative and quantitative research questions, do's and don'ts of qualitative research questions, develop purpose statement, and any 3 qualitative research question of your research projects. अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए. What research question is? As you all know, research question is the question which we are asking to conduct before conducting the research. It usually undergoes a process of reflection and reinforcement, refinement before you get your question to its final version. Qualitative research questions are different from the quantitative research question. Qualitative research questions actually seek to explore or describe phenomena, whereas quantitative research questions are try to develop the or try to check the
relationship, cause and effect relationship. There are different qualitative and quantitative research questions, and these are the two research questions. One is the qualitative and the other one is quantitative. यहाँ देखिए, what is the relationship between self-esteem and career achievement for late adolescents in foster care? यहाँ पर हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने जा रहे हैं। ऐसी सूरत में जब हम एक कॉजल रिलेशनशिप मालूम करने जा रहे हैं, तो ये इट मे बी अ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, डिपेंड्स कि आप क्या मेथोडोलॉजी लेके जाना चाहते हैं। मोस्टली हम रिलेशनशिप मालूम करते हैं इन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, अब हमने कहा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो अगर इफ यू आर यूजिंग स्केल, तो आप जो है वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो फिर आपको रिसर्च क्वेश्चन बनाने में थोड़ा एहतियात करना होगा, बिकॉज नाउ यू आर एट एक्सप्लोरेटरी स्टेज। सो आप डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात नहीं करेंगे, आप यू विल आस्क इज देयर एनी एसोसिएशन और इज फैक्टर दिस एसोसिएटेड विद दिस और नॉट। अच्छा जी, यहाँ देखिए, there are 4 types of research questions and these 4 types are described by Marshall and Roseman. तो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस हैं, दूसरा एक्सप्लेनेटरी है, थर्ड डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्टिव है, फोर्थ एमेंसिपेटरी है जिसके अंदर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं। दिवाली की सेलिब्रेशन हो रही है हमारी तरफ, तो जो है वो क्रैकर्स जो है वो हो रहे हैं। अच्छा जी, नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू दिस स्लाइड, this website, and I'm going to share my screen also with you. Oh, I'm sorry, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, वेट करें। I am going to share my screen with you, but before this I was using the same the slide which you have. Let me open this web page, then I will share my screen with you. जी, तो develop strong research questions. So there are certain characteristics which must be considered while writing research questions. The most important thing is you must be focused on a single problem or issue. So your research questions must not be double barrel और complex नहीं होना चाहिए। एक research question में दो aspects को नहीं discuss करना चाहिए। What is the role of educational leadership in employee satisfaction and how it is different than managerial leadership? Yeah, what is the difference between leadership and management? तो ये नहीं होना चाहिए, फोकस होके एक ही एस्पेक्ट को डिस्कस करें। इट मस्ट बी रिसर्चेबल, फिजिबल होना चाहिए, विद इन अ टाइम फ्रेम ये इसका आंसर मिल जाए। ऐसा ना हो कि ये इतना ओवर इंथुसियास्टिक हो कि आप एक ऐसी चीज आप कर लें, एक ऐसा रिसर्च क्वेश्चन आप लिख लें जिसको अचीव होने में, जिसके आंसर मालूम होने में बहुत देर लग जाए। एंड इन एकेडमिक रिसर्च आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है, तो आप जो है
आपके पास 3-4 months होते हैं, तो you have to be very specific of it. It must be feasible in nature. It must be specific enough to answer thoroughly. इतना भी सिंपल नहीं होना चाहिए, थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर होना चाहिए. रेलेवेंट होना चाहिए योर फील्ड ऑफ स्टडी से. फॉर एग्जाम्पल, आप लीडरशिप पे काम कर रहे हैं और जो है वो आप एक बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो डायरेक्टली इन रिलेटेड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, तो वो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसकी किसी लीडरशिप से. ठीक है जी. अब जरा यहाँ देखिए, हमने कहा कि जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो क्लियरली कनेक्टेड एंड फोकस होना चाहिए अराउंड अ सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम. अब यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस के लिए ये बात हमें पता होना चाहिए कि आपने जो टाइटल लिया है इट मस्ट बी कनेक्टेड विद द टाइटल. तो चूज अ ब्रॉड टॉपिक, डोंट बी वेरी स्पेसिफिक इन योर टाइटल, तभी आपके पास रिसर्च क्वेश्चंस में वैरायटी आएंगी. डू some preliminary readings that you want to focus on to find out about topical debates and issues. Narrow down a specific niche that you want to focus on and identify a practical or theoretical research problem. So this last time I discussed with you how to develop, how to find out the title and how can we narrow it down through funnel approach. अब जरा देखिए, रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्च के एम को फोकस करते हुए बनाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एम इज डिस्क्राइबिंग एंड एक्सप्लोरिंग, तो फिर आप जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ एक्स, व्हाट हैज एक्स चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हाउ डज एक्स एक्सपीरियंस वाई, हाउ हैज एक्स डील्ड विद वाई. अब जरा देखिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप. This might be my research question. What are the, what has, suppose what are the contemporary leadership practices which has been changed over the period of time. ठीक है. Explaining and testing. What is the relationship between this and this? What is the role of X in Y? तो यहाँ पर जब हम relationship को explain कर रहे होंगे तो हम explanatory question बनाएंगे. Then explaining and testing. So what is the relationship between X and Y? What is the role? ये हम explain करने जा रहे हैं. इसके बाद अगर हम evaluating and acting पे आ जाएं, तो evaluating and acting में आपके पास what are the advantages and disadvantages of X? How effective is X? So what are the advantages and disadvantages of authoritarian leadership? How effective is authoritarian leadership than democratic leadership? How can the task be achieved with the help of authoritarian educational leadership? And there are so many. That अब यहाँ पे example research question देखिए. The teacher depending on the scope of your research, you may identify just one question or several. आप चाहे एक question लिखें, चाहे बहुत सारे लिखें. It depends the scope of your research. अब जरा देखिए, the teacher at school X do not have the skills to recognize or properly guide gifted children in the class. अब यहाँ पे ये problem है. इसका research question क्या बनेगा? What practical techniques can teacher at school X use to better identify and guide gifted children? अब यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है? एक्सप्लोरेशन.
Then the second one देखें, what are the main factors that influence young people's decision to engage the gig economy? What do workers perceive as its advantages and disadvantages? Do age and education level has an effect of how people experience this type? अब ये first two types के research questions हैं. एक strong research question must be focused. It must be answerable using primary or secondary data. It does not ask for subjective value judgment. तो अब यहाँ पर इस वेबसाइट पे बहुत डिटेल में गिवन है कि what are the ठीक है, what are the techniques to write research questions. अब यहाँ देखिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन का थोड़ा डिफरेंट बताती हूँ. हाउ डू पीपल हु विटनेस डोमेस्टिक वायलेंस अंडरस्टैंड हाउ इट अफेक्ट्स देयर करंट रिलेशनशिप? द सेम वेरिएबल क्वांटिटेटिव में बनेगा तो कैसे हो जाएगा? हाउ डज विटनेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स रोमांटिक रिलेशनशिप इन एडल्टहुड? इसको अगर हाउ से नहीं भी शुरू करें तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चाइल्ड्स डोमेस्टिक रिलेशनशिप इन एडल्टहुड? तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है क्वालिटेटिव को. अब जरा देखिए डूज ऑफ क्वालिटेटिव. हम ये कह रहे हैं बार बार कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन में पर्पस माइंड में होना चाहिए, रिस्पोंडेंट जहन में होना चाहिए, एंड थिंक अबाउट बिग पिक्चर. तभी यू कैन कंडक्ट अ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन. मस्ट you in the beginning you must not be specific. लेकिन जैसे जैसे आप डिग आउट करते जाएंगे, जैसे हमने कहा जितना आप लिटरेचर पढ़ते जाएंगे उतना आपका टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस स्पेसिफिक होते जाएंगे. अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगी कि आप जो है रिसर्च क्वेश्चंस बना के लाए. ठीक है, और दीज आर दी 5 questions which you will ask while writing your research question. ठीक है, ये 5 what do I want to know in this study, मैं जानना क्या चाहती हूँ, what is going on there, हो क्या रहा है जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, what are the basic social processes, who is involved, what are the cultural norms, are these processes according to or aligned with the cultural norms or these are contradicted with the cultural norms. So you should have a central research question and these sub research questions. Good qualitative research question should invite a process of exploration. और ये तभी आप कर सकेंगे तब जब आप क्वेश्चंस करेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे हाउ से, व्हाई से, हु, व्हाट, इस टाइप के जब आप क्वेश्चंस करेंगे, WH क्वेश्चंस करेंगे तो देन यू कैन फाइंड आउट द आंसर. और वो कह रहे हैं टनल अप्रोच से लेके चलेंगे, यानी इट मस्ट बी ब्रॉड इन द बिगनिंग एंड स्पेसिफिक एट द एंड और नैरो इन द एंड. आपकी फोकस ऑफ इंक्वायरी क्या है? क्या उस क्वेश्चन का आंसर मुझे थिक डिस्क्रिप्शन के तौर पे मिल सकता है? क्या मेरे पास थिक डेटा आ सकता है? अगर आ सकता है तो देन मैं उस पे करूँ. What challenges are encountered by people who switch careers later in life? अब देखें कौन है यहाँ पे ऑडियंस? Those who switch careers later in life. एंड में जिन्होंने अपनी करियर, प्रोफेशनल लाइफ के बिल्कुल एंड में अपना करियर स्विच किया. ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और इनमें सबसे एक सिग्निफिकेंट और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जो KFC के जो कॉरल थे, जिनके नाम से ये फ्राइड चिकन है, इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा. ही स्टार्टेड दिस बिजनेस बिल्कुल एंड में 65 या 60 इयर्स की
age mein he started this business. What special challenges are encountered by people or who switch career later in life due to not being able to perform their primary profession? ये बिल्कुल KFC के ऊपर फिट एग्जाम्पल है. रिफ्लेक्सिविटी होना चाहिए उसके अंदर, कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहा हो, और उसमें जो रिस्पोंडेंट की वॉइस है वो वहां पे नजर आए उसके आंसर में. और एथिकल कंसिडरेशन शुड आल्सो बी देयर व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन. कोई ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करेंगे जो कि एथिकली सही ना हो. ठीक है. So this is all about how to develop research title, objectives, and research questions. There are, as I have already discussed, there are 4 types of research questions, and these 4 type of research questions are exploratory, explanatory, and evaluating. Okay, the 3 types of, and they must be focused. They must answer the primary research question. स्पेसिफिक होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स एंड आर्ग्यूएबल भी हो सकता है, बट इट शुड नॉट बी आंसर्ड विथ यस और नो. आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन टी एंड वेट लूज? नो, ये आंसर नहीं होना चाहिए. इसका आंसर तो यस और नो में आएगा. आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरह होना चाहिए जिसमें आपको आंसर्स जो है वो डेटा मिले. फॉर एग्जाम्पल, what are the factors involved in weight lose? तो अब उसमें ग्रीन टी एक हो सकती है. अगर मुझे ग्रीन टी को ही डिस्कस करना है तो what is the how green tea is associated with weight loss, weight loss in adolescence? तो अब वो पूरे रीजंस वहां पे आ रहे होंगे. इट मस्ट नॉट बी आंसर्ड विद इजीली फाउंड फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो चीजें पहले से मौजूद हैं, कोशिश करें कि ऐसे क्वेश्चन ना करें या ऐसे टॉपिक्स पिक ना करें. अगर बहुत ज्यादा रिसर्चेस हैं तो फिर आपकी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है. योर रिसर्च मस्ट बी यूनिक एंड इट मस्ट लीड टू एडवांस नॉलेज. क्वेश्चंस मस्ट बी रेलेवेंट, irrelevant नहीं होना चाहिए. So this is all about my today's lecture. Hope you people will follow the instructions, understand the information which I have shared with you. If you have any question, you may ask me. I will help you out. Thank you.